Open heart, I know it's hard. Some march on the boulevard. On a personal note, guys, I wanted to share that I am writing a book. The title of the book is Open heart. Trading is an Emotion. And god damn it, really, trading is an emotion. Believe me, trading is an emotion. When we're in the dark. In that book, I'm going to share my journey from literally zero to where I stand today. And you guys who is watching this video, you will be the first buyers of my book. You will experience the greatest power that how can someone so small Break down my walls, but I won't rise again. Cause I stand tall in my environment. markets are bleeding. And I know that many of you are sitting there repenting over your losses, thinking only if I hadn't held on, काश मैंने ये ट्रेड ली नहीं होती, काश मैंने ये लॉस कभी किया ही नहीं होता. I should have cut my losses in time. But here's the harsh truth, my friend. Repenting won't cure anything. If you are in the red, the first step is to cut your लॉस. तुम अपना लॉस सबसे पहले काटो, उसके बाद तुम एक पीसफुल माइंड से आगे बढ़ सकते हो. यू गाइस कैन मूव अहेड. डू नॉट सिट फॉर अ मिराकल टू हैव एंड टेक अ हार्ड लुक एट दोज नंबर्स. जो लॉसेस हुए हैं उनको एक हार्ड लुक दो, मतलब उन लॉसेस को एक डायरी में लिखो दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस. ठीक है भाई, 10,000 का लॉस है, ठीक है 10,000. 1 लाख का लॉस है, ठीक है 1 लाख. Write it somewhere in your diary. This amount is now your target to retrieve back from the market. This loss must be recovered. Must be recovered. But not today, not through desperate trading, not through revenge trading. Okay? In trading, money is never the core issue. Psychology, mindset is the real issue. Money will come back, it always does. Believe me, money will come back, it always does. But if your mindset breaks down, you're going to take that 2 to 3 more trades, you're going to end up in even deep losses. 10,000 लिखा था अभी डायरी पे, अभी 20,000 लिख के बैठोगे कि अब 20,000 रिट्रीव करने हैं. इट विल डिस्ट्रॉय यू बेसिकली. इन शॉर्ट समझ लो, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है. ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है. दिस इज़ अ बिग इशू विद आवर सोसाइटी, विद एवरीवन. ओके, दैट अभी तो लोग जो है ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बल से ही नहीं बाहर आ पाए हैं. दे स्टिल थिंक दैट ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बल. ड्रीम 11 पे टीम बनाना इज़ अ प्रोफेशनल स्किल फॉर देम, मे बी, आई डोंट नो. सो वॉट शुड यू डू? तुम्हें क्या करना चाहिए? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. कट द बुलशिट. ड्रॉप द थॉट ऑफ रिकवरिंग एवरीथिंग टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं अपने व्यूअर्स को राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा. व्हाट यू शुड डू, रिकवर. जो करना है आपको अमाउंट वो करना है. यू शुड रिकवर, बट नॉट एवरीथिंग टुडे. You should drop this from your mind. You should not recover everything today. That's one of the biggest traps traders fall into, and every single person out there, everyone wants to become rich overnight. Everyone wants to cover those losses in a single day. But you need to understand, my friend, that this is stock market. This is business. ये एक business है, ये stock market है. ठीक है, ये एक skill set है. And अगर अभी भी तुम लोग ये नहीं समझ पाए हो कि that this is a skill set, trading is not for you. But all these viewers जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, over thousand and thousand of people watch my videos every single day. They consume it every single day on multiple platforms. So I just want to tell them that you are the one who understand trading. That's why you are on this video. That's why you're hearing me out on this situation, right? Making money in trading is a skill. And if most of the people are not able to understand that, leave trading. But if you are able to understand that, and my friend, I know you who is watching this video, who is giving this video a like, who is my subscriber, who is watching my videos regularly, you will understand this video. Trading is never a secondary source of income, guys. It is never a secondary source of income. Either it is your primary focus or nothing. ये चीज़ माइंड में बैठा लो. It's not a secondary source of income. कि whenever there is a secondary source of income, okay, what you do is कि भाई प्रायोरिटीज़ पे फोकस करते हैं लाइफ में, एंड देन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तो आती रहेगी. अब ट्रेडिंग को अगर तुम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो, तो ट्रेडिंग से पैसा आता रहेगा, इज वॉट यू आर थिंकिंग. बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग ट्रेडिंग. ट्रेडिंग को अगर अप्रोच करना है तो या तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और डू नॉट डू इट. इन्वेस्टिंग को इफ यू वांट टू अप्रोच, हाँ, इन्वेस्टिंग से पैसा आता रहेगा. डिप आएगी, आई विल पुट मोर मनी. डिप आएगा, आई विल पुट मोर मनी.
After 10 years, 20 years, I'll have a corpus that makes me financially free, right? So this is what your thinking is, but about investing, not trading. Trading is something else, guys. It demands everything from you, everything. रिमेंबर वो थैनोस वाला सीन एवेंजर्स में जब उसकी डॉटर उससे पूछती है व्हाट इट टुक, ही सेज एवरीथिंग. एंड दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज. इट टेक्स एवरीथिंग. It takes every single thing. It needs your focus, it needs your discipline every single day. Strong focus, sleepless nights, pain, excruciating pain. Trading is an emotion, and god damn it, really, trading is an emotion. Believe me, trading is an emotion. In that book, I'm going to share my journey from literally zero to where I stand today, where I speak in front of you guys, where I speak in front of you guys and tell every single thing of my life. From literally zero to these big figures that I have created over time. I didn't stumble upon this small part of success that I've created. I manifested my path. I acted on my dream. I manifested my path and I then acted on my dream. Sleepless nights, tons and tons of losses, and multiple profits. And I'm still far from done. I'm still far from done, guys. The journey isn't about reaching an end. The journey isn't about reaching an end. It's about embracing the process. It's about embracing the process. And this process comes up with pain, with struggle, sleepless nights, and everything. See, I have faced countless sleepless nights. When someone at home tells me to sleep, I respond, maybe I'm not made to sleep in this life. Maybe I'm not made to sleep in this life. Somebody comes and says, yaar, Apur, so ja bhai, ab kitna late ho raha hai. I tell them, perhaps in the next life. Perhaps in the next life. That is what your mindset should be. Rest is a curse until you achieve something. See, until you have achieved something, good to go. But till then, rest, big no. Big no to the rest. So yes, my whole book comprises of psychological, mindset related stuff, my journey and everything. And you guys who is watching this video, you will be the first buyers of my book. You will experience the greatest power, that how can someone so small can do something so big. And this is just the starting. This is just the starting of my journey. You guys will experience it, put it in your life, अपनी लाइफ में उतारो और तुम लोग देखो कि किस तरीके से तुम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. Small, small, small. Remember, 1% change every single day is not equal to 365% change in a year. गूगल पे सर्च करो जाके, इफ आई चेंज 1% एवरी सिंगल डे, हाउ मच आई विल चेंज इन 365 days in a year. It's not 365%, my friend. You'll be amazed what that number is. So 1% change. वो 1% change जो लोग अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, the book Trading is an Emotion is for you, my friend. Most of us come from really poor, lower middle class, upper middle class families. Our dream is simple: to get satisfied with the life, marry someone, and maybe get satisfied, get settled in the life. Satisfaction, settlement, marriage, all these things, all these terms comes into our life, right? Escape the matrix is what should be your only focus. Escape the goddamn matrix. And the matrix will take you back to those jobs. Maybe, see, I'm not saying job is not good. Job is a tool. Do your job until you have a sufficient amount of money and then break the matrix. Do something to create some corpus and then escape the matrix. The end game should be to get out of this money matrix. We believe trading can help us do that. You and me, we are here because we think trading can help us do that. See, I'm going in deep into the root cause of our situation. बहुत deep जा रहा हूँ मैं अपनी situation root cause पे जा रहा हूँ कि कहाँ से हम जो है पहले trading को सोचते हैं, फिर उसे अप्लाई करते हैं, फिर रोते हैं, 2-3 लोगों से पूछते हैं कि मेरा ये लॉस हो गया, वो हो गया, अब क्या करूँ मैं. ये पूरी एक चेन है. दिस इज अ चेन. सो रूट कॉज क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज? पहले तो मनी मैट्रिक्स हो गया, एंड देन हम लोग को लगता है कि ट्रेडिंग इज अ टूल, right? And definitely you are right, it's a tool to reach there, but it is a tool made by the wealthy peoples at the top to grab more money. ज़्यादा और पैसे खींचो भाई, masses से और पैसे कैसे निकाल सकते हैं. That is the tool made by the wealthy. If you think it's easy,
or made for you, you are wrong, my friend. It's not easy and neither made for you. That is what trading is. It's tough. The dark side of the trading, most of the people who have blown their accounts, like me in my past time, in my in the starting of my career, जब भी मैं कोई नए इंस्ट्रूमेंट पे जाता हूँ, I blow my account. That's the goddamn curse I come up with. Not me, every single one of you. But if you can dream it, if you can speak about it, and you can work towards it, nothing in the world can stop you reaching from your goals, my friend. Nothing. Learn again and then act. क्या बोला मैंने? लर्न एक्ट. एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सीखते रहोगे कुछ नहीं होगा. एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. You should know how to act. Start from the scratch if you have to. Start from the scratch again, my friend, if you have to. Backtest a new strategy. Push yourselves beyond your limits. Skip 2 meals a day. Skip 2 nights of your whole week. I don't care if that what it takes, but finish what you started. This is a grind, and this grind is worth it. You can make trading a tool to become rich for sure, but it needs discipline. It needs sheer dedication. A lot of bad things will come throughout this process, but I feel you who is watching this video, you can go through that. Now take a step back and start reviewing your past trades. First of all, now the end game. मतलब ट्रेडिंग पे बात कर लेते हैं. इन द एंड वी शुड टॉक अबाउट समथिंग अबाउट ट्रेडिंग, दैट हाउ टू अप्रोच नाउ, हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ मार्केट्स. ये मार्केट्स जो गिर रही हैं, फिर थोड़ा बहुत रिकवर होती है, फिर गिरती है. हाउ टू अप्रोच ऑल दिस. टेक अ स्टेप बैक, स्टार्ट reviewing your past trades. Start reviewing your past trades. Go to your Zerodha terminal, open your console, look at your old trades, see what went wrong, identify your mistake, write it in a journal, whether it was your poor entry, whether it is your good entry, improper stop loss placement, simply letting emotions take over. At that time, you recognize what went wrong, first of all, in your best trades. Learn from both the failures, both the success, as I always say. सीखो उससे. And the most important thing, guys, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, if you think that मेरी strategy is perfect, होता है. My strategy is perfect but not working in this market. My strategy is good but अब अचानक से ब्रेकआउट्स के मेरे फेकआउट्स हो रहे हैं. अब मेरे जो शॉर्ट ट्रेड्स थी यार, वो अच्छी नहीं बन पा रही है. I cannot short the market anymore like I used to. So it's time to change the strategy. It's time to act. अगर तुम ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लो कि मार्केट्स डू नॉट केयर अबाउट योर बिल्स, मार्केट्स डू नॉट केयर अबाउट दैट यू हैव टेकन अ लोन, मार्केट डू नॉट केयर अबाउट कि तुम जो है अभी बेड पे लेट के वीडियो देख रहे हो, खड़े हो के वीडियो देख रहे हो, या कैसे कोई वीडियो देख रहे हो और उसके बाद तुम अप्लाई कर रहे हो एक स्ट्रैटेजी. मार्केट्स डू नॉट केयर. Only number matters. That is the end game. Only the numbers matter. If nothing work out, don't lose hope. Start from the scratch, rebuild your strategy. That is the plan of action. So act करना बहुत ज़रूरी है. और अगर पिछली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, make a new one. Refine your approach. That is what it takes, guys. That is what it takes to be a full-time trader, or maybe if you are making losses in trading, that is what it takes to recover all those losses. वो नंबर जो वहाँ पे लिखा हुआ है तुमने अपनी डायरी में, ठीक है, वो लॉस का वो रिकवर ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको. मेक अ जर्नल इफ यू नेवर डिड, डॉक्यूमेंट एवरी ट्रेड, why you took it, what is your plan, what is your next plan, how you managed it, what are the results. All these things are important. All these things. This isn't just about keeping records, it's about reforming yourself. अपने आप को एक रिफॉर्म वे में प्रोड्यूस करना, 1% अपने आप को ग्रो करना एवरी सिंगल डे. दिस इज द कम बैक टाइम फॉर यू. ये तुम्हारा कम बैक है गाइस. ये ऐसे ही तुम कम बैक करोगे अपनी लाइफ में. सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से कम बैक किया जा सकता है. यू हैव गॉट दिस. एंड इन दी एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग. बहुत सारे फील्ड्स हैं, पीपल थिंक कि उसमें मेरे साथ कोई भी नहीं है. तुम एक जॉब कर रहे हो, मे बी तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, या फिर किसी ने कुछ दे दिया. तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुमने किसी ने धोखा दे दिया, तुम रो रहे हो कोने में बैठ के. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन विद यू, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. बट इन दिस मैं तुम्हें नहीं धोखा दूंगा किसी भी एंगल से. आई एम विद यू. I'm making videos for you. Start learning. I'm sending my market snapshots. I'm sharing my PNLs. Verified PNL हो गया, normal PNL हो गया. I used to make, मतलब पिछले साल I was making
every single month around 2 lakh rupees. Some months were really great, 3 lakh rupees were made in a single month also for me using swing trading only. But is towards the end of the year I had made like some trades were really good, like Jubilant Ingravia, एक सिंगल ट्रेड में 3 लाख रुपए बन गए थे, ठीक है. एंड कुछ ट्रेड्स में 50,000 रुपए गए भी हैं, कुछ ट्रेड्स में आई हैव मेड इवन वर्स लॉसेस इन द स्टार्टिंग 60,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़. एंड बिलीव मी मैंने ऐसे भी मंथ्स देखे हैं जिसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट माइनस 20,000 रुपीज़ लॉस, बिकॉज माई सेटअप वॉज नॉट देयर. तो क्या मैं वो शेयर करना बंद कर दूंगा? नो, आई एम नॉट. आई एम शेयरिंग एवरी सिंगल थिंग that is happening with me to you guys. So I am there with you guys. Maybe someone else is not there with you at this time, but I am there with you. इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करो उन लोगों के साथ who really want to be a goddamn swing trader. एंड मेरी जो बुक आ रही है उसका मैंने अनाउंसमेंट ऑफिशियली इस वीडियो में कर दिया है. सो स्टे ट्यून फॉर द बुक. इट्स गोइंग टू बी अ mind-boggling adventurous stuff for you. Mind-boggling. You will see that what all I have faced and the starting of the journey of a swing trader